So marginally, there's a marginal difference. Well, to begin with, digital Pakistan does hold a lot of promise for Pakistan. And for those who think it's a rhetoric, there's a very interesting fact I would like to share with you, that for every 10% increase in broadband connectivity, there's a subsequent increase of 1.38% in GDP for a country like Pakistan. And over the next few minutes, these are the probing questions that we will be asking our panelists, that what will it take for a country like Pakistan to really, truly benefit from the advent of digital technologies? I will now request the panelists to briefly introduce themselves, and while they introduce themselves, if they can say a few opening words on what their vision of digital Pakistan is. So, Temur, we can start with you. You have a mic. Assalamualaikum ji. My name is Taimur Malik. I'm the Director for Digital Transformation at SAP Pakistan. As part of my job, I look at a lot of public policy work, work closely with the government, various ministries, trying to push forward the policies that we feel, both as a company and as IT executives, what can help the country go forward, as Ms. Fatma just said. Based on the divide in this room, I feel like I won't be a very popular speaker. I do believe that digital Pakistan is a lot of rhetoric. But having said that, perhaps something comes out of this discussion and we can see how to turn it into a reality. Thank you, Taimur. You're not alone in thinking it's a rhetoric, so I think it'll be interesting. My name is Ali Nasir. I'm the Chief Data and Strategy Officer at Jazz. Pleasure to be here. I think this is a very interesting topic. And I can already tell from the brief conversation that we've had on the panel that whoever did take the effort to come here will enjoy the next hour. Thank you. Assalamu alaikum ji. Mera naam Bilal Abbasi hai and I work at Ignite. And I'm working as General Manager and look after the startup ecosystem and also the new initiatives at Ignite. So question from Fatma that is it a reality or not? I think it's in a transition, so let's see. Assalamu alaikum ji, मेरा नाम तारिक रशीद है. I'm part of Systems Limited. I would say the largest IT company in Pakistan, and obviously the digital Pakistan. From these two words, I think context is very, very important. That what are we talking about? Digital Pakistan for public, or digital Pakistan for people who are actually working in this industry or making an impact. So obviously there is a different view on both sides. I would say that when we talk about digital Pakistan from the government's side, it is more of a rhetoric, but on the other side there is a lot of hope. Excellent. Bilal, I will begin with you since you represent the government of Pakistan. Governments play a key role when it comes to the digitization agenda. What are some of the initiatives that at the national scale are being undertaken by the government when it comes to achieving the vision of digital Pakistan? So digital Pakistan ke baare se whenever we start discussing, so usually hum telecom or IT ko ek different perspective mein le jate hain. But when you talk about transformation, so 2013-14 mein 3G, 4G के आने के बाद से there was a transformation. It was a huge transformation. लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें ना तो government has not taken much of an interest. कोई नए initiatives ऐसे नहीं आए, कोई private sector को support ecosystem provide नहीं किया गया कि वो further flourish कर सकें. But recently what we have done, Ministry of IT के platform से, we feel that there are a couple of initiatives अगर वो लिए जाएं so we can achieve a lot. So data is the basic thing जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. So अगर आप ये देखें कि उस data की classification important है, and more importantly आपको digital ID की एक provision आपने citizens को देना है, and at the same time data sharing is the most important thing. अभी अगर आप State Bank से बात करेंगे या FBR से बात करेंगे या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बात करेंगे, nobody shares the data. जब आपका डेटा शेयर नहीं हो रहा, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर सर्विसेज नहीं चल पा रही हैं, एंड इवेंचुअली आप सिटीजन्स को सर्विसेज थ्रू द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोग्राम डिज़ाइन किया दैट इज़ कॉल्ड एज
डीप डिजिटल इकोनॉमी इन्हांसमेंट प्रोग्राम. सो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम डिजिटल आईडी प्रोवाइड करें सिटीजन्स को, डिजिटल लॉकर्स दें ताकि ये अटेस्टेशन और बाकी चीज़ों से सबकी जान छूट जाए. एवरी टाइम यू अप्लाई समवेयर तो आपको पता चलता है कि अटेस्टेशन करा के डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट करवाने पड़ते हैं. टू अवॉइड दैट पार्ट हमने वो चीज़ ऐड की. हमने उसके अंदर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर आर टू मॉडल्स जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं. एक आपका साउथ कोरिया का मॉडल है जिसमें वो कहते हैं कि डेटा को एक जगह के ऊपर आप इकट्ठा कर लें. नाउ दुनिया इससे कहीं आगे निकल गई हुई है. आप एस्टोनिया के मॉडल को देखें तो दे टॉक अबाउट द ESB एंटरप्राइज सर्विस बस या डेटा एक्सचेंज लेयर की बात करते हैं. सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट एज वेल इन द डीप प्रोग्राम. वहाँ पर वी आर नादरा इज बाय द वे बिल्डिंग दैट एक्सचेंज लेयर. Then certain part is given to the Board of Investment. कुछ हिस्सा नेशनल IT बोर्ड को दिया गया, कुछ हिस्सा इग्नाइट को प्रोवाइड किया गया. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके वो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रही हैं जिस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और डेटा के ऊपर ज़्यादा काम करेंगी ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को इनेबल कर सकें. बाकी सर्विसेज उनकी तरफ से आनी है. देयर आर मैनी अदर चैलेंजेस, स्पेशली जब आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं. सिस्टम्स हमारे साथ बैठे, दे आर द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, लेकिन एवरी टाइम दे सेट इन एनी कॉन्फ्रेंस या टॉक टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेमिटेंसेस के चैलेंजेस हैं और बहुत से चैलेंजेस हैं. बट कमिंग बैक टू द पार्ट कि हमने कौन से इनिशिएटिव्स दिए हैं, पॉलिसी साइड के ऊपर तो बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लेकिन इट्स नॉट ईजी. बट प्रोजेक्ट साइड के ऊपर देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम किया जा रहा है. बट इफ़ यू आस्क मी कि क्या ये सफिशेंट है, तो आंसर इज़ नो. देयर इज़ अ लॉट टू डू. बहुत काम करने की ज़रूरत है लेकिन गवर्नमेंट्स यूजुअली आर स्लो. सो यहाँ पर द ईजीएस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ कि गवर्नमेंट बैकआउट करे बहुत सी चीज़ों से, बिजनेस करने से पीछे हट जाए, प्राइवेट सेक्टर को इनेबल कर दें, प्राइवेट सेक्टर से सारी चीज़ें करवा दें. सो द गुड मॉडल इज अगेन आई वुड से इग्नाइट का मॉडल बहुत अच्छा है कि इग्नाइट डजंट डू एनीथिंग इटसेल्फ, दे जस्ट डिज़ाइन द प्रोग्राम एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट एंड दे फंड इट. सो इस मॉडल के ऊपर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. थैंक यू. आपने डेटा की बात की. दिस brings me to you, Ali. You represent Jazz. Jazz is Pakistan's largest digital operator. Telecom is the infrastructure layer for any digital ambition. How do you view the current situation with the government policy moves? Do you think that a lot of initiatives that the government is taking is pro-industry or pro-telecom? Gee, thank you, Fatma. I think you asked initially, how do we see what's our vision of digital Pakistan? The way I would define digital Pakistan is that we will become digital Pakistan if we have universal connectivity, which is the base layer, जिधर telcos का बहुत role है. But then the layer on top that is absolutely critical, and Bilal talked about that, is the presence of data-based decision making. वो data है, but obviously everyone holds on to it. So unless you have connectivity and then you have data that is available to people, we don't have digital Pakistan. So that's kind of, and I feel that on both fronts, we're struggling. Even though telcos have done their bit, as Bilal mentioned, जब 2014 में NGMS licenses आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सिर्फ 2% थी, और वो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड था जो घरों में आपके वाईफाई लगा होता है. आज जो अगर टोटल आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखें तो उसमें से 98% मोबाइल ब्रॉडबैंड है. फिक्स्ड कनेक्टिविटी वहीं की वहीं है जहां 10 साल पहले थी. So I believe telcos, and of course government did facilitate that. So I think the 2014 auction was a good initiative. But uske baad se, while the connectivity layer is more or less built, that can certainly be improved. और 4G की connectivity वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं. But I think that the problem is, and I'll probably take an analogy of a farmer or agriculture. अगर आप मेरे से को पूछें कि पाकिस्तान की डिजिटल पाकिस्तान का क्या मसला है, तो मैं एक फार्मर की एनालॉजी लूँगा. देखें, एक किसान जो होता है जब काश्त के लिए अपनी फसल लगाता है तो उसको पता है कि मैं ये फसल लगाऊंगा और इसको हार्वेस्ट करके पैसे बनाऊंगा, विच इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल. लेकिन साथ ही वो दरख्त भी लगाता है अपने
फार्म के इर्द गिर्द, वो दरख्त उसको छांव देते हैं, उसकी लैंड इरोजन रोकते हैं, और वो दरख्त शायद उसको टेंजिबल रिटर्न नहीं देते हर सीज़न या हर साल, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दैट बिकम्स एन एसेट फॉर हिम. अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशंस, और मैं गवर्नमेंट कह लें आप या सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, पाकिस्तान में 2-3 साल की वैलिडिटी से ज़्यादा नहीं आती, और उन सब ने, ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, पिछले 25 सालों से, जब से आई गेस डिजिटल और आईटी का सेक्टर है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैं वो एक फार्मर की तरह डिजिटल पाकिस्तान को एज ए कैश क्रॉप देखते हैं. वो देखते हैं कि हम इसमें पैसा कितनी जल्दी से कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली द रॉन्ग पॉलिसी. वी नीड टू इन्वेस्ट in digital Pakistan, and that investment will not yield results for the next 5 to 10 years. ये मैंने अनोखी बात नहीं की, सारी दुनिया में इसका एग्जाम्पल है, और जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो इसी वजह से की है. So I think the biggest problem, Fatma, in my view, is that we are very short-sighted when it comes to digital Pakistan policies. And again, there is no one government or individual to blame, but overall, as an economy, we have not got that right. Great, thank you. You spoke about जो आपने farmer की analogy दी and how the farm is his asset essentially. Pakistan's asset is essentially its youth, right? Over 60% of our population are people under the age of 30. This brings me to you, Tariq. You represent systems. It's a great success story for Pakistan. How do you, in your experience, view this huge asset that we have, and what digital can do for them in terms of creating opportunities, upskilling them, and creating more livelihoods? Because we see a lot of the youth leaving the country now. But do you think digitization holds the promise for the youth of Pakistan? जी, आई थिंक उसमें सबसे अगर आप देखें ना कि अगर सिस्टम्स की कंपनी के लिए, सिस्टम जैसी कंपनी के लिए पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट, स्किल्ड रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट. जितना भी हम कहें कि ये लोग जॉबलेस हैं, इशू ये है कि सिस्टम को पिछले साल 1.5 साल पहले, क्योंकि लोकल स्किल इतनी अवेलेबल नहीं है, उसकी मेन वजह करिकुलम इज़ आउटडेटेड. उस पर उस तरह का फोकस नहीं है. अभी तक 15 साल 20 साल पुरानी चीज़ें चल रही हैं. अल्टीमेटली सिस्टम्स ने एक और इंटरनेशनल डिलीवरी सेंटर खोलना पड़ा है सिर्फ इसलिए कि लोकली लोग अवेलेबल नहीं हैं. अब उस चीज़ को आगे देखने के लिए जो करंट टेक्नोलॉजी है या जिस तरह से जो डिमांड है फ्रॉम अ सर्विसेज पर्सपेक्टिव, उस साइड पे ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यू कैन ओन, देयर विल बी वेरी फ्यू लाइक लम्स, GIK, या देयर मे बी फ्यू अदर यूनिवर्सिटीज. अदर देन दैट आप किसी यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठा के देख लें ऑन दिस साइड, दैट इज़ वेरी मच आउटडेटेड. उसमें उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं. ठीक है, सो उस एंगल से it is a big challenge for companies like systems. अब जैसे I think there is nothing wrong with people going outside, but we should have a full pipeline ready for us. Unfortunately, that has dried out, and we're not doing anything at that level. Even at the university level also, I think any government needs to intervene. One is that we have to be very surgical to train people. Although system in its own capacity, we go back to institutes, universities, we invite their professors, we show them the real projects which are happening globally, which system is working and what other options are available, even suggesting them also, but it is not very easy for them to actually go and change the curriculum. I think that is where we need to really work hard. So I think as many graduates on the IT side we can bring in, I think we can consume it as a overall industry. And then obviously there were questions also, why there is no new unicorn, why those things are not coming up. And the other part is that especially because if there are many unicorns part of Pakistan system, then obviously we will have people available in the local market also, and we can compete globally, and obviously the whole impact everybody knows about the economy and all that. Sure, thank you. And this brings me to you, Taimur. You mentioned you work in the public policy space. What are some of the key challenges that you think companies like SAP face when we talk about digitization or advancing the digital agenda?
So I can certainly talk about SAP, but I feel like that might not be too representative considering that we are a multinational company. For various reasons, despite how much we might want to, we're not really able to give back to the community in Pakistan the way we would want to. We have had challenges with respect to, for example, registering a company in Pakistan, which means that we have to repatriate our funds abroad. So there's a lot of challenges that exist for SAP specifically when it comes to kind of operating in a country like Pakistan. But more broadly, working with government, and I feel like that really touches at the core of what the issues are when it comes to digital Pakistan. Tariq Saab made a very important point about the importance of distinguishing between digital Pakistan from the government side and the private side. At the government side, Bilal Saab would probably be able to guide us a lot better. I see a lot of fragmentation. I see a lot of siloed work. A classic example from perhaps 2019 or 2020 was when, with a lot of fanfare, we had a fantastic executive from abroad, Mr. Shabahat Ali Shah, come in, head the NITB. Within 3 months of that, we had another fantastic executive come in, Ms. Tanya Idrus, to head Digital Pakistan. We have multiple institutions that look at IT from a broad perspective. I have been in the IT sector in Pakistan for 5 years. I have no idea what either one of them does. They cannibalize on private sector opportunities. They have no kind of coordination amongst themselves when it comes to how policies should look. There are differing policies. There are contradictory policies that I see in government. We see initiatives being taken like the cloud policy, for example. The last I read about the cloud policy, about 2 years ago, every government institution was supposed to be migrating towards the cloud. 2 years later, we have nothing whatsoever like that. So there's a lot of issues when it comes to, public policy, when it comes to continuity of policies. We have issues when it comes to harmonization and kind of siloed, fragmented work. And with due respect to a lot of the, fantastic bureaucrats that I've worked with, none of them are IT experts. We have generalists heading IT organizations and ministries. Of course, Bilal Saab being a very important exception to that. There are other exceptions as well, but by and large, I don't see the government having the capacity or the capability to really take this digital Pakistan vision forward. Okay, excellent. I think so. If I capture what you just said, it's this silo approach versus and the leadership at the government level. Bilal, would you like to comment on this? Temur raised some interesting points about the cloud policy. We recently saw the AI policy come up also. And over the next few months, with all the challenges, whether you mentioned data as one area, how do you see these policies actually contributing towards digital Pakistan? So, there is not just one policy which is going to fix everything. So you need to have multiple policies. So for AI, you need to have a AI policy because, again, data is important over there. So talking about the cloud policy, I was one of the authors of that policy. So what we tried to do was we wanted to give private sector an opportunity to come up with businesses and do the cloudification in Pakistan. So we wanted more CSPs in Pakistan. That's why we discourage government organization to set up any indigenous or in-house solutions. The cloud policy was approved. Then there was a process of accreditation, and the PPRA actually jumped in. So once different organizations started jumping in, the process started getting difficult because it's not easy to acquire the services or to procure the services. So they're coming up with a framework agreement, and they're also coming up with the accreditation, how to get it done. And I'm hoping that probably in a few months, I'm not part of it anymore, but I'm hoping that in a few months, they'll get it done. Regarding digital Pakistan policy, look, the important part is we all know that what to do. We always talk about it. But how to do that, how part has always been missing. So what we tried to do in last year, we actually identified all the issues, what exactly needs to be done in 8 different verticals. So telecom was there, exports were there, capacity building, another important thing are HR, e-commerce, innovation, startup ecosystem. So everything was there. We also added the how part.
that what needs to be done under these vertical. Again, I would say that governments are really slow in getting those policies because this red tapeism, people like myself, other technical people, they prepare all the policies in consultation with the private sector, but then they have to follow that bureaucratic processes. It has to go to the joint secretary, then additional secretary, to the law division, to the cabinet, and if it's an act, then it has to go to the parliament as well. So the process is so long that it sometimes gets, vanished, lost in the way. So AI policy, Digital Pakistan policy, data protection bill, cloud policy, cyber security policy, all these policies were prepared. But one thing what we have realized, there was one big policy which was missing, which probably government needs to work on, and that is data governance policy. Because data governance policy is one policy which actually tells you or which guides the cloud policy. Because if you don't know what data needs to be shared, how data needs to be classified, because in cybersecurity, if the data is secret data, it needs to be dealt differently. If it's a public data, it needs to be dealt differently. So you need to classify your data first. So that policy is missing, and I think that's just an opportunity for all the big organizations to support government in preparation of that policy. And maybe after that, it will be easier to make the rest of the policies and getting them approved. So data governance policy is, I would say, the mother of all the policies. Sure. Ali, would you like to add on that? Because I understand data sovereignty is a big area for Jazz. That's something they've been actively working on. Are there some insights that you'd like to share in that regard? Gee, actually, before I do that, I think to give credit to Bilal and some bureaucrats, I agree with them. I was one in an earlier life. The cloud policy was an example of a good consultative policy that the government undertook. It's actually one of the few government policies that from a digital IT person in the private sector, I can support. As a result of the cloud policy, Jazz launched its cloud called Garage. It was launched in, I think, February last year. And within 1.5 years, mashallah, it's now the largest onshore cloud in the country. Lekin 95% of that business has come through private sector. गवर्नमेंट को जब हम जाके वो पॉलिसी दिखाते हैं और कहते हैं कि जी आपको, जिस तरह तैमूर ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत आपको ये चीज़ें पाकिस्तानी क्लाउड्स पे रखनी हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो इजाज़त लेनी पड़ेगी अपनी सरकार से, या and as Bilal said, then it goes and it gets lost in translation. So I think, yes, we've made a good cloud policy, but the cloud office, I think, there was envisaged under the MOIT, ab shayad ban gaya. I think I met Junaid the other day and he mentioned that the government needs to do a much better job of executing its own policies. Unless that happens, honestly, all of these great policies will only be worth the ink that they're written on. Coming to data, so I came into this role of Chief Data and Strategy Officer recently, and as pehle I was not a generalist, but not a data person. And now I'm kind of becoming a data evangelist because I'm realizing the power of this data. Aur abhi bahar to main shayad itna hum nahi gaye, although we're coming up with a product where we will be able to do data analytics for our customers. But within Jazz, I've realized that we were not leveraging data enough. And it's surprising, we have the largest data lake in the country, but uske bawajood, we were not truly capitalizing the power of data. And honestly, I think it is one of those things that Pakistan can do greatly with, because it doesn't take a lot of money, it doesn't take a lot of capital investment, it is something that is there. और जो आपने data sovereignty की बात की फातिमा, आज क्या होता है कि मैं as a customer Google पे जाके जो कोई research कर रहा हूँ, I'm giving Google opportunity to collect data points on a Pakistani citizen. और वो उसी चीज़ को, उसी knowledge को, उसी insights को Nike को या Adidas को बेच रहे हैं कि आप अली को ये जूते किस तरह बेहतर बेच सकते हैं. So the money that is being created, and Google, by the way, pays no taxes in Pakistan. So the money that is being made on Pakistani data is not coming into Pakistan. And that's why I think data sovereignty is absolutely critical.
not from a firewall. I know there is a national security perspective to it as well, but I won't go into that. Purely from a commercial perspective, if Pakistan has to truly be a digital Pakistan, we need to be more in control of our sovereign data and ensure that Pakistani data stays in Pakistan. That's kind of our point of view, but I think getting there will be not an easy task. Sure. Tariq, this brings me to you, and companies like System are pivotal when we talk about a digital Pakistan. What will it take to create more organizations like Systems in Pakistan? What do you think are some of the key challenges? You talked about unicorns and the lack of actually unicorns in Pakistan. What do you think are some of the key reasons we've not been able to create that kind of ecosystem? I think multiple areas हैं. I'll use the example of COVID time. जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि जी आप अपने बंदे फायर ना करें, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आप विदाउट इंटरेस्ट स्टेट बैंक आप अपने बैंक से लोन ले सकते हैं, स्टेट बैंक आपको कर. अगर आप जाके स्टैटिस्टिक चेक करें तो शायद ही कोई एक लोन किसी के लिए अप्रूव हुआ हो. ठीक है. सो द गवर्नमेंट की वो अब नाउ वी एक्सपेक्ट कि जी इतना मेजर किस्म का शॉक आया है और उसमें वो कंपनी सर्वाइव कर जाए सर्विस डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. जो पॉलिसी और बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बट नथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड. अब जो और दूसरा पार्ट ये है कि इस वक्त अगर स्मॉल स्टार्टअप की बात करें, 100 लोगों की कंपनी, 150 लोगों की कंपनी, सबसे बड़ा मसला आई थिंक चले रिसोर्सेज इज़ वन पार्ट, वो किसी तरह से ट्रेन करके एड्रेस कर सकते हैं. सबसे बड़ा मसला उनके लिए वर्किंग कैपिटल का है. इस वक्त ऑब्वियसली आपने अभी सुना है कि जैसे फ्रीलांसर पिछले कितने सालों से स्ट्रगल के बाद अब जाके उनके अकाउंट ओपन होने शुरू हुए हैं. दूसरा ये है कि वो वर्किंग कैपिटल के लिए उस तरह का सेटअप नहीं है कि जिसमें वो जाके कहीं से लोन लें. बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं जी फिजिकल कोलेट्रल चाहिए. आप फिजिकल कोलेट्रल देंगे तो उसके बाद आपको पैसे मिल सकते हैं कि जी अपना घर रख दें, कुछ और चीज़ करके रख दें. तो ये जितनी भी अच्छा, और इन सारी क्योंकि कंड्यूसिव नहीं है उस तरह की इन्वायरमेंट. अगर कोई निकल के आ जाता है तो इट्स प्योर लक फॉर दैट. लेकिन जैसे इन्वायरमेंट की बात है कि जी इन्वायरमेंट में जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मिसिंग हैं इस स्टेज पे. तो उस वजह से मेजॉरिटी लोग फिर यही करते हैं. अब तक का ये पार्ट था. अभी जैसे फर्ज करें कि सिस्टम इस वक्त तकरीबन सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान के 8 इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं. सिस्टम लिमिटेड इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब तक का ये था कि जी आप अगर डॉलर में लेके आ रहे हैं पैसे, आप रिटेन नहीं कर सकते थे डॉलर में. अब आके रिसेंटली हुआ है कि ठीक आप 50% रिटेन कर सकते हैं. रिटेन करना इज़ वन पार्ट ऑफ इट. लेकिन जैसे फर्ज करें सिस्टम जैसी कंपनी ने अगर एक्विजिशंस करनी है रीजन में या अदरवाइज कुछ काम करना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे. सो आई थिंक मल्टीपल चीज़ें. स्टार्टअप की अपनी एक स्ट्रगल है ऑब्वियसली, जिसके पास आइडिया है, और वेंचर कैपिटल का हमें पता ही है कि उसका क्या किस तरह से मसले हुए हैं. लोगों ने कितने कपल ऑफ वो बस्ट हुए हैं, लोकल सिस्टम भी नहीं है. तो आई थिंक वो इस तरह की अभी तो एक स्ट्रगल ही है मेरे हिसाब से. तो आई थिंक उस साइड पे फैसिलिटेशन वाला पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है. क्योंकि अगर वो मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ भी जाएं तो ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्ट कौन करेगा. जो जहाँ पे सेटअप है वो एक इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कंट्रोल भी हमें चाहिए. अब वो कंट्रोल अगर ले लेंगे तो चलेगा कैसे. ठीक है. तो इस तरह के कई सारे मल्टी डायमेंशन टाइप के इश्यूज हैं. And Taimur, for SAP in Pakistan, I think that to attract companies like SAP to come to Pakistan, again, that'll be instrumental when we talk about digitization or digital transformation. What do you think are some of the enabling policies which may already be in place? I'm trying to take the conversation to a more positive note. I'm not sure I'm the best for a positive spin, but look, SAP Pakistan has been very fortunate. We've done a lot of business in Pakistan, perhaps more than what our regional managers may have expected, thanks to partners like Systems Limited and many other partners in the ecosystem here. To attract a company like SAP in Pakistan, I feel like
number one, the government has to relax a bit. We need to deregulate. We need to figure out how to incentivize companies like SP, like Google, like AWS, like Microsoft coming in. Ali Sab spoke about the importance of data residency and the national security perspective about it, for example. I can tell you, Ji, for a fact that our own data, well, I'm not talking about Jazz specifically, but generally the data that our government possesses is at far more risk than if it were to be placed abroad in a robust, sophisticated infrastructure like Google or AWS might offer. In Pakistan, unfortunately, because, if I may speak freely, I think we're such a securitized state that we have an almost paranoid kind of suspicion of foreign companies. We have a paranoid suspicion of what would happen if, God forbid, our data were to go abroad. Quite honestly, despite that, I would say in spite of the infrastructure that the government provides us, it's miraculous that we have unicorns like Systems Limited. There are companies that do want to come in, but simply do not have the infrastructure, do not have the incentivization from the government. So, short of, I think, honestly, a deep rethink of the policies that we have, a divorce from this highly securitized paradigm, short of that, I don't see more and more companies entering. We are here, we cannibalize on a lot of business in the country. I don't mean SAP, I mean foreign companies. We take advantage of periods of growth in the economy, and we try to sell SAP, of course, as a business software company, so we sell to other businesses. And so, we are very much a part of the boom and bust cycle that the country experiences. But short of a deep rethink, in my opinion, of kind of where we want this country to go and what kind of protectionist schemes we might have, what kind of incentives we want for foreign companies, do we even want them there? I don't think we're going to be able to attract the kinds of companies we would like to bring in that kind of FTI. Sure. So there's been a lot of buzz recently. We've heard that in the next year the 5G auction will take place, and this brings me to the next question, which is for Bilal and Ali yourself as well. That with all this talk on 5G, how much do you feel that policy moves like these will help achieve the digitization agenda? If we go in terms of the infrastructure, because I understand it requires a huge investment, how ready is the industry? So Bilal, if you want to just start, and then we can move on to it. Although it's not my topic, but still, I just want to give an insight, Sure. which I've been listening in ministry. Sure. There has been a discussion, and there were a few people in Ministry of IT, they were pushing for 5G. But what I get from the discussion that has been going on within the ministry, that industry was not ready for it, because they really want that, there are certain other things which needs to be done first to actually move towards 5G. So I think if government is pushing without the support from the industry, I think we as a government should not jump into such sort of things. You need to bring industry on board. You need to facilitate them first, because there is a lot of infrastructure deployment that needs to be done if you launch 5G. So whether industry is doing good, whether their revenues are good, they're earning well, whether we have leveraged or benefited from 3G, 4G enough. If we have done all these things, then I think we should move towards 5G. But otherwise, I think we need to bring industry on board before going towards 5G. Sure. Ali, would you like to say something? I would like to add that 50% of our country is still not online. So in this context, conversations like 5G, where do they stand? Yeah, thanks for setting it up for me nicely, Bilal. Dekhiye ji, any technological progress is good. So 5G is a good technology. I would never argue against 5G. Unfortunately, Pakistan, mein jis tarah Bilal ne zikr kiya, the enabling conditions for 5G to exist and succeed do not exist. So just by launching के 5G ताकि पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार हो जाए जिनके पास एक ज़माने में न्यूक्लियर बम हम कहते हैं जी हम 7th न्यूक्लियर पावर हैं, but what does that do for us?
So yes, we can launch 5G tomorrow and claim that we're one of, I don't know, 15, 20, 30 countries that have launched 5G. Unfortunately, it will be a complete failure. The reasons for that are not because I'm saying so. The reason for that are structural in the economy. اس وقت جس طرح فاطمہ نے ذکر کیا 50% of Pakistan is not on the internet. تو 5G ہو 4G ہو 3G ہو ان کو کوئی غرض نہیں ہے بیکاز وہ انٹرنیٹ پہ ہے ہی نہیں. تو پہلی تو ہمیں چیز یہ کرنی ہے کہ اس 50% کو انٹرنیٹ پہ لے کے آنا ہے اور کنزیومر ریلیونس کے لیے 4G is more than adequate. ساری دنیا میں 5G کا بزنس کیس IoT M2M ان چیزوں پہ پریڈیکیٹڈ ہے. کنزیومر ریلیونس 5G کی کیا ہے کہ نیٹ فلکس کی مووی آپ اگر پہلے 10 سیکنڈ میں لوڈ کرتے تھے ڈاؤن لوڈ 5G کی شاید آپ 2 سیکنڈ میں کر لیں گے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو اٹس ناٹ اے کنزیومر ریلیونٹ ٹیکنالوجی جسٹ از یٹ. اٹ ول بیکم ون ود ڈرائیور لیس کارز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پاکستان میں 5G کا اس وقت سب سے سستا فون 2.5 لاکھ روپے کا. تو اگر 5G آ بھی گئی less than 1% of the population today has a 5G phone. And I would hazard a guess کہ اگر 5G آ بھی گئی اگلے 10 سال 2 یا 3% سے زیادہ آبادی وہ فون افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ جو کوئی استعمال نہ کر سکے. 5G کا جو خرچہ ہوگا انڈسٹری کے اوپر اور جو بلال نے بات کی کہ انڈسٹری نے تھوڑا سا موقف یہ لیا ہے کہ جی دس ڈز ناٹ میک سینس, وہ بزنس کیس ہی نہیں بنتا. IMF سے بڑی مشکل سے ہم نے بلینز آف ڈالرز لون لیا ہے. اگر یہ 5G آ گئی تو یہی ٹیلی کام کمپنیز اس میں سے کافی سارا پیسہ واپس بھیج دیں گی ٹو بائی دیٹ 5G equipment which is not made in Pakistan. And my last point on this is very simple. Again, we're not against technology, we're not against progress, but the enabling conditions that exist. میں آپ کو صرف اس چیز پہ ختم کروں گا کہ اس وقت 4 ٹیلی کام کمپنیز ہیں پاکستان میں جن میں سے سوائے ایک کے 3 خسارے میں اور ایک از اپ فار سیل. اور اگر یہی پالیسیز گورنمنٹ کی رہیں تو جو ایک کمپنی اس سال پروفٹ میں ہے وہ بھی اگلے سال خسارے میں ہوگی. سو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دی انڈسٹری ٹو سپورٹ این انیشیٹو دیٹ از گوئنگ ٹو کل دم. اینڈ سیڈلی دیٹ از دا سچویشن. I am all for 5G, but the government has to correct some structural faults in the system before it can be a success. Sure. And as we move towards the end of the panel discussion, are there any questions from the audience that you would like to ask our panelists? Please raise your hand. If you can just stand up and ask your question. Well, the mic is coming, please. Thank you. ہلو مائی نیم از منظور. جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان کو آپ نے انالوجی کیا فارمر کے ساتھ, تو میں اس کو تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں یوں کہوں گا کہ اگر پبلک لیول پہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ اگر ڈیجیٹل پاکستان کا اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے سٹیزنز کا ایکسپیرئنس اور سٹیزنز کو جو سیوک سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ اداروں سے, اگر اس کا ایکسپیرئنس ڈیجیٹلائزیشن سے بہتر نہیں ہوتا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا, آپ گئے دفتر سے, انہوں نے ایک اپلیکیشن سے پرنٹ لیا آپ کا اور کہا جی کہ یہ جاؤ فلاں سے ٹیسٹ کرو, یہ کرو وہ کرو, تو ایسی ڈیجیٹلائزیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں جس سے سیوک سروسز امپروو نہ ہو. اور سیوک سروسز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتا دوں. دوسرے یہ کہ جو ٹیلی کام اور IT سیکٹر میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ملٹرائزیشن ہے, کیا یہ ہماری IT پروگرس کو یا ٹیلی کام کی پروگرس کو کوئی سلو ڈاؤن کر رہی ہے یا اس پہ کوئی افیکٹ کر رہی ہے؟ تھینک یو.
Okay, तो आपके दो सवाल हैं. Whoever from the panel wants to talk about civic tech in Pakistan and uska, with the potential of that over the next few years, we can have a shot at that. Yeah, I'll probably take the Sure, first one. sure, please do. So मंसूर बिल्कुल आपने सही कहा और आपने अगर मैंने जो डिजिटल पाकिस्तान की विजन बताई थी वो यही थी कि कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी के ऊपर ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा जिस तरह एज यू सेड एक आम पाकिस्तानी को डिजिटल पाकिस्तान तब हिट करेगा जब उसे घर बैठे बैठे उसका पासपोर्ट भी रिन्यू हो जाएगा और वो डिजिटल आईडी के साथ या विद द प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस उसको सर्विसेज मिलेंगी जो कि आज नहीं है. तो आज एक्चुअली एक थोड़ी सी फ़र्क होती है. एक डिजिटलाइजेशन है और डिजिटाइजेशन है. पाकिस्तान में इस वक्त हम किसी हद तक डिजिटाइज हो चुके हुए हैं कि हमारे बहुत से वो जो कागजी फाइलें होती थी वो अब ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जा सकती हैं. लेकिन हमारे सिस्टम्स उसके मुताबिक चेंज नहीं हुए vis-a-vis citizens. हाँ, ई सहूलत सेंटर कुछ गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं, उससे काफ़ी ज़िंदगी आसान हो गई है और एक्चुअली हमें शायद पता भी नहीं है बट अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट बट उनको गाइड करने वाला सिटीजन्स को बताने वाला भी कोई नहीं है. ज़ाती तौर पे मेरे साथ एक माय फादर इज़ 86 माशाल्लाह, तो उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, बायोमेट्रिक नहीं आता, तो वो हर जगह जाके बैंक वगैरह जाके बड़ी दिक्कत होती है. तो मुझे पता चला कि आप नादरा से जाके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि आपको अलाउ करता है कि जो उम्र रसीदा हजरात हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स मिट गए हैं. आई डिडंट नो दैट एंड आई एम सपोज टू बी इन IT. सो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या सहूलियात अवेलेबल हैं वो शायद उस हद तक नहीं है. एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि जब तक आम शहरी को डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होगा हम इसको डिजिटल पाकिस्तान नहीं कह सकते. मलिक सईद अली नसीर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि हम 5G की बात तो कर रहे हैं लेकिन जब 4G के स्पेक्ट्रम की बात आई तो उस वक्त एक या दो कंपनियों ने ही वो स्पेक्ट्रम खरीदा था. तो अभी कितनी टेलीकॉम कंपनियां 4 में से जो 4G मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर रही हैं और कितना एरिया कवर किया गया है? हुकूमत तो कह रही है कि हम 5G लेके आ रहे हैं, मुल्क के लिए बहुत बेहतर है. आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. बिल्कुल इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर लेके आते हैं तो वो नहीं होगा. लेकिन अब 4G पर भी जब मुकम्मल नहीं है, हमारा पूरा मुल्क अभी 4G पर भी मुकम्मल नहीं है. बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे जो है वो अभी तक 4G नहीं आई. तो इस सिचुएशन में जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हम 5G लेके आते हैं तो हम कहीं डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक पीछे तो नहीं गिर जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन उसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ. देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला लाइसेंसेस का ये है कि वो डॉलर डिनोमिनेटेड है. होता क्या है कि आज गवर्नमेंट ऑक्शन करती है और जायज़ को या किसी कंपनी को कहती है कि आप लाइसेंस लें. वो लाइसेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल $400 मिलियन का. मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं 15 साल का वो लाइसेंस है, मैं अपना बिज़नेस केस बनाता हूँ कि मैं अगर $400 मिलियन का ये लाइसेंस लूँगा तो इस पे मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस तरह आपने कहा इक्विपमेंट वगैरह की. तो एक बाकायदा बिज़नेस केस बना होता है कि इस पे मैं मज़ीद $200, $300, $400, $500 की इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि 15 साल में मैं इस इन्वेस्टमेंट को रिकूप कर सकूँ. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे लाइसेंसेस डॉलर डिनोमिनेटेड हैं तो मेरी जो वो 400 मिलियन की मैं किस्तें दे रहा हूँ वो हर साल बढ़ रही हैं. तो एक साल अगर वो 100 मिलियन मैंने दिया, वो 300 मिलियन रुपीस बना, तो अगले साल मुझे नहीं पता कि वो 400 मिलियन बनेगा या 500 मिलियन बनेगा, जिसकी वजह से वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो हमारी लाइसेंस पेमेंट्स में जा रहा है. सो एक तो वी बिन पिटिशनिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जी हम पाकिस्तान में पैसे कमाते हैं, हम रुपीज़ में पैसे कमाते हैं, हम तो अपने कस्टमर्स को डॉलर्स नहीं चार्ज करते, तो आप हमसे क्यों डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं? जिसका जवाब आज तक मुझे तो नहीं मिला कम से कम. So number one issue is that this dollar denominated license has to go. जब तक ये नहीं जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए उस लाइसेंस के लेने के बाद वो सफ़र करेगी. I hope that answers your question. 4G इस वक्त तकरीबन 52% के करीब कवरेज है. So, any other question? On that note, I will ask one last question from the panel. What is the one key recommendation that each of you would make
for us to make digital Pakistan a reality? I'll start with you, Temur. I'd like to echo what Tariq Saab said regarding the paucity of the right skill sets in Pakistan today. You know, we have a tendency to fetishize India. We talk as if, you know, we're mere steps away from maybe not competing, but at least being at par with them when it comes to the IT output. But we also forget that it's been more than 50 years since, you know, the foresight of Jawaharlal Nehru, that they established, you know, multiple IT schools, and I'm forgetting what it's called, the IITs of India. So I really feel like to make this a reality, we truly need to enable our young people, our youth, with the right skills. I have a question for Ali Saab and for you, both being in jazz. You know, we always hear that there's about 50% access to mobile broadband. But if I'm not mistaken, it's less than 2% that are actually active subscribers. So, आपकी बात ये बड़ी दुरुस्त है कि हम nuclear power तो बन गए, what does it do for us? हमने अगर penetration कर भी ली, even if we get to, you know, 70–80%, what will that do for us, right? Unless the youth has the right skill sets to actually take advantage and integrate into this, you know, the global world where digital technologies actually are a big part of, you know, progress. So. Ali, would you like to add to that? No, I agree with Temur. I think Tariq Saab ne alluded to this as well, the right skill set. Dekhein, I've had the pleasure and privilege of living and working abroad for 17 साल पाकिस्तान से बाहर काम किया और मैं एक चीज़ पाकिस्तानी टैलेंट का आपको बताऊं कि हम दुनिया में मार नहीं खाते किसी से. Given the right opportunities, Pakistani talent, because the systems don't work for us in Pakistan, every Pakistani has a mentality कि यार ये काम किस तरह करना है rather than कि मुझे पहले काम करने के लिए resources चाहिए. And that mindset is extremely important in this day and age. Unfortunately, the systems around us limit that capacity. I think, Tariq Saab, if I'm not mistaken, we're the 4th largest freelancing population in the world. Despite only 52% of us being connected on mobile broadband, yes, we are the 5th largest country also, but I think the fact that we can speak reasonably good English, ये बहुत बड़ा advantage है, and we are digitally savvy and we are driven. Pakistan का future bright है. There are very few things that are required. I think the skill sets is one. But honestly, at the governmental level, and I used to be a bureaucrat, Taimur, and the reason why I left was because I couldn't deal with it. But I'll tell you something that we proposed to the government back in 2017, we being Jazz, कि और कुछ हमने मुल्क study किए, Malaysia, Russia, India, Turkey, that have followed that digital route. And of course, Taimur, you're absolutely right, India saw this in the 1960s. आज भी अगर हम एक मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटलाइजेशन जो कि हमारे एक नेबर मुल्क ने सेटअप की जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है हर महीने एंड उस मीटिंग में वो सब मिनिस्ट्रीज़ को कहते हैं कि आपने डिजिटलाइजेशन पे ये काम करना है अगले महीने हमें रिपोर्ट करें. MOIT का वो मैंडेट इस वक्त नहीं है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट स्टार्टेड ऑफ मोर एज अ टेलीकॉम्स थिंग. I genuinely feel that if there is one body driven by the Prime Minister, the head of state himself or herself, that will really start to drive the agenda. Pockets में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं. Ignite का बिलाल ने जिक्र किया. Private sector में certainly we're very proud of systems, but it needs to be brought together, and that the private sector cannot do, that one government agency cannot do. If there is लोग बिजली की बात कर रहे हैं, energy की बात कर रहे हैं, of course security, terrorism are important. I genuinely feel that if digitalization is taken as one of the big priorities of Pakistan, हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे. Thank you. मैं समझता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि US गवर्नमेंट इज़ गुड एट फेलिंग प्रोजेक्ट्स. पाकिस्तान इक्वली अच्छा है इस चीज़ में. सो एक चीज़ तो ये है कि लेस गवर्नमेंट आई थिंक कि ये होना चाहिए. दैट्स वन थिंग. सेकेंड, अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है तो इट शुड बी पीपल सेंट्रिक रादर देन स्टेट सेंट्रिक. हमारी हर पॉलिसी हम स्टेट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होते हैं, पीपल सेंट्रिक नहीं होती है. सो अगर ये माइंडसेट चेंज किया जाए सरकार की तरफ से तो ये ज़रूरी है हर पॉलिसी के लिए.
And third thing is, of course, capacity building की बात हुई, 62% youth है. अभी भी टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, दुनिया को पहुँच सकते हैं बहुत आराम से. इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल है, हेल्थ सेक्टर में दुनिया को पहुँचना बहुत मुश्किल है. सो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कर सकते हैं, और हमारी यूथ अगर 62% है तो उसको राइट स्किल सेट देकर आप काम कर सकते हैं. हमने इग्नाइट के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 3.8 मिलियन रजिस्ट्रेशंस की, फ्रीलांसिंग की आपने बात की, फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस किए. एक अच्छा नंबर तो हमें मिल गया हुआ है, लेकिन वो जर्नल आपका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हर साल. $400 मिलियन पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं. बट आपको स्पेशलाइज रिसोर्सेज की ज़रूरत है, स्पेशलाइज स्किल सेट की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर बहुत सा काम करने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक कि हर प्रोग्राम के लिए हमें गवर्नमेंट को नहीं देखना. हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैज़ है, SAP है, सिस्टम है, इनके अपने भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं. व्हेन दे इंडक्ट समबडी तो बहुत से लोगों को ट्रेन किया जाता है. बट अदर देन दैट एज ए CSR भी आप लोग बहुत सा काम कर रहे हैं. अगर उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जाए इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, प्रॉब्ली वी कैन ब्रिंग मोर रिजल्ट्स. आई थिंक तीन चार चीज़ें जो एड्रेस की हैं, आई थिंक वो बिल्कुल आई फुली एंडोर्स दैट. आई थिंक दूसरी चीज़ अभी यहीं से आई थी कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं उनको दे आर टोटली अनअवेयर कि जी हमें करना क्या चाहिए उस स्टेज पे. आई थिंक आई डोंट नो इसका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बट आई थिंक ये करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो की एरियाज़ हैं वहाँ पे टेक्निकल लोग जो रियली अंडरस्टैंड के गवर्नेंस में क्या ज़रूरत है, स्टेट को क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में क्या ज़रूरत है, आई थिंक उस तरह की इंटरवेंशन हो. और उसके साथ फिर जब अली ने कहा कि जी ठीक है, टॉप लेवल पे एग्जीक्यूशन साइड पे देर इज़ अ पुश, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इवन गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे वो सिविल एविएशन की ऑटोमेशन हो, चाहे वो किसी और पब्लिक सेक्टर की यूटिलिटी स्टोर की ऑटोमेशन हो, वो सारी चीज़ें लेफ़्ट राइट और सेंटर हो जाती हैं इस वजह से कि उनके गवर्नेंस एट द गवर्नमेंट लेवल इज़ रियली नॉट अप टू द मार्क. और वो उसी सूरत में आ सकती है. और ऑब्वियसली जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आई थिंक अली इज़ वेरी he knows, he has the insight also from the bureaucracy perspective or from civil service perspective also. I think वहाँ पे भी एक intervention की ज़रूरत है अगर long term sustainable trajectory पे जाना है in terms of a growth either on digital or any other part of the government or private sector. Excellent. Thank you to the panelists. I think in conclusion, the way it was summed by everyone, I would just like to add that it has to be a long-term goal to reach digital Pakistan. It will take a village. We have to work together. Collaboration is key. And most importantly, I think we, Ali ne mindset ki baat ki, I think the name is Jugaro mindset. So I think that's the hustle we have in our youth is really our biggest strength. So on that note, I'd like to thank everyone who joined us today. I would like to thank our panelists today. I would like to thank